Good morning, everyone. Welcome to the morning con call. We start with technical and derivatives outlook. So yesterday we saw that there was a gap down in the market, followed by the global. Since there was a correction in the Asian markets, we also opened gap down, but then we saw a very good recovery during the day. So this is what we were expecting during the day. We believe that the decline should be viewed as a buying opportunity, and that has exactly acted on the charts. So at the close, the market was up by 42 points, closing at 17,754. Basically, auto, oil and gas, and PSU banks were the one which saw the strength in yesterday's market, whereas realty, pharma, and healthcare were on the sidelines. So looking at the chart pattern and today being a weekly expiry, I think we expiry should be somewhere to 17,800 cash levels. So that is a possible expiry level for the Nifty futures, and for the bank Nifty it should be somewhere around 41,000. 600 on the for the in the cash level. So that is the expected. We expect an expiry to be on a neutral, flat note. We don't expect any aggressive move on the either side. So even for the bank Nifty, there was a recovery from the day's low. Basically, IndusInd Bank was the one who was the leader in yesterday's session, and bank Nifty, the closing is quite strong. So I believe that Bank Nifty for the day specific, a little bit of sideways move, but then maybe next couple of days we should be heading for 42,000 on the Bank Nifty. That remains the short-term view for the indices. We have already initiated a Nifty futures long call in yesterday's session, and we are looking for 17,900, 17,950 on the higher side. So that should we hold on to that view. And on the lower side, the things will go wrong if 17,400 levels are broken. So as long as 17,400 levels are not broken, we are quite positive on the market. And then the supports for the Bank Nifty do comes at 40,500 level. So as long as 40,500 levels are not broken on the bank nifty, even I believe that the markets are strong, and we should be seeing the continuation of the upside bounce. Coming to the derivatives data, Nifty futures and Bank Nifty both has seen a long build up. Nifty futures, the long build up was to the tune of 4.21%, which was the addition of 0.5 million shares. The put call ratio has recovered from 1.12 to 1.26, which is a sign of strength. The major call additions were seen in 17,800 and 17,900 call options, so that will act as a resistance. On the put front, 17,600 and 17,700, so that will act as a support. Bank Nifty has also added a long built up to the tune of 1.88%, which was the addition of 0.09 million shares. The PCR has also recovered from 1 ratio to 1.27, which will add strength. So major call additions were seen at 42,000. So that will act as a resistance. And on the put front, 41,500 put option. So that will act as a support. So net there was a buying. Even the derivatives data suggests a positive bias for the market. The stocks which we are liking, the from the trading point of view, the sugar stocks were in focus, and within sugar, Balrampur Chini has seen a very good volume breakout, so that can be kept on a focus. Beside, the IT stocks are looking a little bit positive for the day, for the next 1 or 2 trading session, so that can be kept on the radar. Uh, Lastly, the FI data. So FI in index futures has sold 6,000 contracts. The net positions is minus by 78,000. And this long short ratio, which was earlier at 0.26, has now 0.25. So slight decline, which is okay. So again, I will say that whenever this FI long short ratio gains about 30, 35, so that will be a sign of strength, and this the net short position should come below 30,000, yeah, maybe below 25,000. So in that would be a scenario when FIs will turn out their positions and they will start aggressive buying the market. So net, we are still in a bounce back trade. So we wait for next 1 or 2 days and then review the further directional trend. So that's all from my end. I'll hand over to Bunty sir for more research updates. Thank you. Thank you, Bridges sir. Good morning, sir. Good morning, team. Few updates from my side. Starting firstly with the steel sector. Steel prices have gone up by 2 to 5% in last 2 days. If you see HRC price now stands at 61,000 rupees per ton. However, this is mostly to offset
raw material prices which has already gone up. So does not see too much of a positive impact for the steel companies as such. And overall on a steel sector, we have a neutral view on the sector as such. Secondly, on the Mahindra and Mahindra, the Mahindra and Mahindra subcompact XUV 300 has undergone updates with new engines to meet the stricter emission norms that come into effect from April 1, 2023. The new engines are compliant with RDE norms, as a result of which the prices of the XUV 300 has been increased by up to rupees 22,000 rupees depending on the variant chosen. The XUV 300 competes with other popular models like Maruti Suzuki Brezza, Tata Nexon, and Hyundai Venue in this segment. This news seems to be slightly negative for the Mahindra and Mahindra. However, we are very much bullish on the stock with a buy rating. Next is on the Birla Soft. And we have interacted with the management of Birlasoft. The company has informed that it will hire a dozen of senior leaders at various positions across sales, delivery, and verticals to drive quality top line growth. In addition, considering the challenging macroeconomic conditions, company will increase its focus on winning profitable and large deals which will de-risk the company of potential client specific issues. Despite challenging environment, Birlasoft aims to record double-digit growth in FY24 on the back of new logo additions and client mining. Riding on these various margin levers like increase in offshore revenue and reduction in cost, management expect to reach mid-teen margins in FY24. However, considering the macro challenges and demand softness in the manufacturing vertical, which is approximately 46% of their total revenue, we expect growth to remain subdued. We also expect margins to remain under pressure due to lower growth, revenue growth, and investment in sales and delivery. We are very much positive or bullish on Birlasoft. Next is on the IndusInd Bank. As per the news sources, it is roaming around that Mr. Sumant Katapalia, MD, has got the extension of 3 years from RBI, which, if it's true, will be very much positive from the stock performance point of view. If we remember last year, same time, RBI has given only 1 year extension due to MFI portfolio, which was struggling with the fraud issues. And we are very much positive or bullish on IndusInd Bank with a buy rating as such. Next is on the Bharat Forge. The company, through its subsidiary Kalyani Powertrain, has inaugurated its first e-bike manufacturing facility at MIDC Chakan, with annual production capacity of 60,000 units and which could be scalable to 1 lakh units. So this seems to be a very much positive news with respect to Bharat Forge. Lastly, on the Aptus Value Housing Finance, it's a small affordable housing finance company listed. Now, as per the media sources suggest that Cholamandalam Investment Company, it's a NBFC, is trying to buy the controlling stake of around 37% in Aptus Value. However, Aptus Value has clearly denied being part of any negotiation to hand over management control to Cholamandalam. So that's it from my side. Over to you, research team. Yeah, thank you, sir. Good morning, everyone. We'll continue with further updates, starting with Jubilant Pharma now has received an USFDA approval for signing inspection classification for a voluntary action indicated for its Fortis API manufacturing facility. Second is related with Adani Group stocks. Adani Enterprises, Adani Power, and Adani Will have again been phased into short-term ESM mechanism, which will be effective from Thursday, according to NSE circular. Yesterday, there was a circular that Adani Enterprise has been removed from this short-term framework, but again, they have been reinstated on that. SBI has raised 3,717 crores through its Tier 3 basic compliant and Tier 1 bond issuance in the current fiscal year for the coupon rate of 8.25%. NRB Bearings Crystal has reaffirmed the company's credit rating for the bank loan facility as AA stable and commercial pay instruments at A+.
Shoppers Stop, the Singapore-based Shiseido Asia Pacific, has signed a strategic distribution partnership agreement with Global SS Beauty Brands, a subsidiary of Shoppers Stop, to expand its brand footprint in India. Through the partnership, Shiseido Group will launch its global makeup brand NARS Cosmetics in second half of 23 key cities in India. Ramakrishna Forging, the company, has incorporated a wholly owned subsidiary RKFL Engineering Industry to implement the resolution plan under the corporate insolvency resolution process for acquisition of JMT Auto. RKFL Engineering is also going to engage in the business of forging, pressing, stamping, and roll forming metal and power metallurgy. KEC International, the liquidation process of KEC Global FZ LLC domiciled in UAE has been completed, and the said entity has been relisted from the records of the local regulatory authority where it has been listed. Sequence Scientific, the company, has terminated a share purchase agreement to acquire 100% shareholding in Teneta Pharma in November 22. It had announced acquisition of Teneta Pharma, but the said transaction has not yet been materialized. Shriram Finance, two entities have offloaded the NBFC shares worth of 1329 crore. The private equity player Apax Partner, subsidiary Dynasty Acquisition and Arctic Acquisition, offloaded their shares in the industry of the NBFC, and the word detailed deal available on the exchanges. Nalco is one of the largest integrated bauxite alumina power complex in the country. Announced that it will consider second interim dividend for the 22-23. The record date has been set for the same, and the equity dividend is for the face value of 5 rupees per share, total to be 6.5 per share, and which gives a yield of 7.8%. Kirloskar Engine Oils has said that the promoter entity has divested 17.7% stake in the company for the 825 crore through open market transactions. Alembic Pharma Limited on Wednesday said it has received the final approval from the US Health Regulatory US FDA for the parazosin hydrochloride capsule, which is used for the treatment of hypertension. The approved ANDA and the therapeutically equivalent for the reference listed drug. It will be under 1 mg, 2 mg, and 5 mg sizes of Pfizer Inc. And lastly, with the there has been a yield conversion in the Indian bond market. Also, the 1-year yield has been moved above the 10-year yield bond. It is trading at 7.48, and the 1-year 10-year yield benchmark trades at 7.26. And according to the experts, there will be no short trend for this, resulting into the consistent rise in the T. So that's it from mine. I'll hand over to Shidija for Hindi updates. थैंक यू। अभी यही कॉल को हम लोग एक बार हिंदी में कर लेते हैं। फर्स्ट अपडेट है स्टील सेक्टर के ऊपर। स्टील की जो प्राइसेस है वो 2.5% 2 to 5% से लास्ट ट्यूसडे से इंक्रीज हुई है। HRC प्राइसेस है वो अभी 61,000 पर टन है। ये मोस्टली ऑफसेट रॉ मटेरियल की जो प्राइसेस है वो भी गॉन अप, मतलब ऊपर गई है, तो ये इतना पॉजिटिव नहीं है स्टील कंपनीज के लिए। नेक्स्ट अपडेट है महिंद्रा के ऊपर। महिंद्रा एंड महिंद्रा की जो सब कॉम्पैक्ट SUV एंड XUV 300 थी, उसके जो न्यू इंजन के अपडेट के लिए स्ट्रिक्ट एमिशन जो नॉर्म आया है जो इफेक्टिव होगा 1 अप्रैल से, उसके लिए कंपनी ने बहुत सारी उसके लिए अंडरगोन किया है। और ये जो न्यू इंजन है वो कॉम्प्लीमेंट रहेंगे RED नॉर्म्स के साथ, और इसका जो रिजल्ट है वो प्राइजेस और जो है XUV 300 की वो इंक्रीज होगी अराउंड 22,000 से, डिपेंडिंग जो उनका वेरिएंट है उसके ऊपर है। और XUV 300 कम्पीट करता है अदर पॉपुलर मॉडल्स लाइक मारुति सुजुकी ब्रेजा, टाटा नेक्सन, हुंडई वेन्यू सेगमेंट में। तो ये स्लाइटली नेगेटिव हो सकता है महिंद्रा के लिए, बट ओवरऑल हमारा लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम से बाय रेटिंग है स्टॉक के ऊपर। बिरला सॉफ्ट जो कंपनी है उन्होंने इंटरैक्ट किया है मैनेजमेंट, हम लोगों ने इंटरैक्ट किया है उनके मैनेजमेंट के साथ। तो कंपनी ने इन्फॉर्म किया है कि वो हायर करेंगे सीनियर लीडर्स को वेरियस पोजीशन के लिए अक्रॉस सेल्स डिलीवरी वर्टिकल्स में, और जो ड्राइव होगा क्वालिटी टॉप लाइन ग्रोथ के लिए होगा। और इसके अलावा कंसिडर करेंगे चैलेंजिंग माइक्रो इकोनॉमिक कंडीशन। बिरला सॉफ्ट ने ये भी बोला है कि वो इंक्रीज करेंगे उनका फोकस विनिंग प्रॉफिटेबल और लार्ज डील्स पे, तो रिस्क ऑफ कंपनी की पोटेंशियल क्लाइंट स्पेसिफिक इशू होंगे उसके लिए। और इसके अलावा जो उनका डिस्पाइट मतलब चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है, बिरला सॉफ्ट एम करता है कि उनका डबल डिजिट ग्रोथ हो फाइनेंशियल ईयर 24 में एस्टिमेटेड है, और उनका उसके ऊपर इसके अलावा न्यू लोगों का एडिशंस, क्लाइंट माइनिंग के ऊपर भी काम चल रहा है। और वेरियस मार्जिन्स लीवर्स के लिए इंक्रीज हो रहा है, ऑफशोर रेवेन्यू रिडक्शन हो रहा है, सबकॉन्शियस कॉस्ट के ऊपर,
मैनेजमेंट का ये है कि वो मिड इन मार्जिन फाइनेंशियल ईयर 24 तक पहुंच पाएंगे। और ओवरऑल हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें ग्रोथ जो है वो सबड्यू होगी और मार्जिन जो है वो अंडर प्रेशर रहेंगे क्योंकि लो रेवेन्यू ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट सेल्स एंड डिलीवरी में है इसके कारण। नेक्स्ट अपडेट है इंडसइंड बैंक के ऊपर। न्यूज सोर्स के अनुसार मिस्टर सुमित कठपतलिया जो एमडी है उनको एक्सटेंशन मिला है 3 इयर्स के लिए आरबीआई से। ये न्यूज सच हुई तो ये पॉजिटिव होगा स्टॉक के लिए क्योंकि लास्ट ईयर के सेम टाइम पे आरबीआई ने उन्होंने उनको सिर्फ 1 ईयर का एक्सटेंशन दिया था क्योंकि जो एमएफआई सेगमेंट है पोर्टफोलियो का उसमें फ्रॉड इशू का स्ट्रगल चल रहा था तो उसके कारण। तो ये न्यूज वेट एंड वॉच जैसे होगी इंडसइंड बैंक के लिए। भारत फोर्ज कंपनी है उनकी जो सब्सिडरी कंपनी है कल्याणी पावर ट्रेन उन्होंने इनॉग्रेट किया है फर्स्ट उनका ई बाइक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एमआईडीसी चाकन में। और उसका जो एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी होगा वो 60,000 यूनिट होगा और वो स्केलेबल करेंगे 1 लाख यूनिट्स। देन नेक्स्ट अपडेट है एप्टूस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस इंडिया के ऊपर। जो मीडिया के अनुसार चोलामंडलम है वो बाय करने वाली है कंट्रोलिंग स्टेक 37% एप्टूस वैल्यू में। और कंपनी ने अभी डिनाई किया बीइंग अ पार्ट ऑफ मतलब कोई भी निगोशिएशन के लिए और हैंडओवर मैनेजमेंट के पास कंट्रोल गया चोलामंडलम के। देन नेक्स्ट अपडेट है जुबिलियंट फार्मोवा जो कंपनी है उन्होंने अनाउंस किया है कि उनको यूएस एफडीए का कम्युनिकेटिंग असाइन इंस्पेक्शन क्लासिफिकेशन जो वॉलंटरीली एक्शन इंडिकेटेड 40 एपीआई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए यूएस एफडीए से। देन नेक्स्ट अपडेट है अदानी ग्रुप स्टॉक के ऊपर। अदानी इंटरप्राइजेस अदानी पावर अदानी विलियमर उनको अंडर शॉर्ट टर्म के लिए एडिशनल सर्वेलेंस मैकेनिज्म जो फ्रेमवर्क है उस पे रखेंगे अकॉर्डिंग टू एनएससी सर्कुलर के हिसाब से। एसपीआई है उन्होंने रेज किया 3,717 करोड़ थर्ड बेस फ्री कंप्लेंट एडिशनल टायर 1 बॉन्ड इशूएंस से करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए और जो कूपन रेट है वो 8.25% होगा। देन एनआरबी बियरिंग्स है जो रेटिंग एजेंसी है क्रिसिल री उन्होंने रीअफर्म किया है कि कंपनी का जो क्रेडिट रेटिंग है बैंक लोन फैसिलिटी का वो ए माइनस से स्टेबल और कमर्शियल पेपर्स इंस्ट्रूमेंट्स के लिए A1+ किया है। शॉपर्स स्टॉप जो कंपनी है एशिया पैसिफिक लिमिटेड उन्होंने साइन किया है स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप अग्रीमेंट ग्लोबल एसएस ब्यूटी ब्रांड्स के साथ जो सब्सिडरी कंपनी है शॉपर्स स्टॉप की जो बेसिकली एक्सपांड करेंगे उनका फुटप्रिंट ओवरऑल इंडिया में। और ये पार्टनरशिप के साथ श्री सिसोदिया जो ग्रुप है वो लॉन्च करेंगे ग्लोबल मेकअप ब्रांड और एनआरसी कॉस्मेटिक जो उनका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में सेकेंड हाफ फाइनेंशियल मतलब सेकेंड हाफ 2023 में जो इंडिया के जो की सिटीज है उसमें। देन रामकृष्ण फॉरेन जो कंपनी है उन्होंने उनकी जो होली ओन सब्सिडरी है आरकेएफएल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री वो इम्प्लांट कर रही है उनका जो रिजोल्यूशन प्लान है अंडर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस एक्विजिशन के लिए जो जीएमटी ऑटो के लिए था। और ये आरकेएफएल इंजीनियरिंग है वो एंगेज करिए उनका बिजनेस फॉरेन प्रेसिंग स्टैंपिंग एंड रोल फॉर्मिंग ऑफ मेटल और पाउडर मेटलर्जी में। देन केईसी इंटरनेशनल कंपनी जो उनका लिक्विडेशन प्रोसेस था केईसी ग्लोबल एफजी एलएलसी वो डिमोलाइज हो गया है यूनाइटेड अरब इमारात से जो कंप्लीटेड हो गया है। कंपनी ने अपडेट दिया है कि वो डी रजिस्टर्ड फॉर्म में रिकॉर्ड्स में लोकल रेगुलेटरी अथॉरिटी से रजिस्टर्ड हुआ है। देन नेक्स्ट अपडेट है श्रीराम फाइनेंस के ऊपर। जो 2 एंटिटीज है उन्होंने बोला है कि वो अपलोड कर रहे हैं शेयर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी श्रीराम फाइनेंस के शेयर जो उसकी जो वर्थ है वो 1,329 करोड़ है ओपन मार्केट से ट्रांजैक्शन से। ये जो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स है एपेक्स पार्टनर सब्सिडरी है डायनेस्टी एक्विजिशन एंड आरकानी एक्विजिशन एफपीआई ऑफलोड करेंगे उनके शेयर्स एनबीएफसी फर्म से। डायनेस्टी सोल्ड कर रहा है 83.550 लाख शेयर्स एनएससी पे और अरकान की ऑफलोड कर रहा है 24.98 लाख शेयर्स बीएससी से। ये बल्क डील होगा एक्सचेंज से इंफॉर्मेशन मिली है। देन नाल्को जो कंपनी है उनको लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड बॉक्साइड एल्यूमिनियम पावर कॉम्प्लेक्स कंट्री है जो उन्होंने अनाउंस किया है कि वो कंसिडर करेंगे सेकेंड इंटरम डिविडेंड फाइनेंशियल ईयर मतलब फिजिकल ईयर 2022-2023 नेक्स्ट वीक के लिए और उसकी जो रिकॉर्ड डेट रहेगी वो सेट होगी। और ये जो है फिजिकल ईयर एंडेड मार्च 2022 का उसमें करंटली कंपनी ने डिक्लेयर किया था इक्विटी डिविडेंड 130% का फेस वैल्यू थी ₹5 पर शेयर की।
और अभी टोटल मतलब उसका जो 6.5 पर शेयर था, करंट शेयर प्राइस कंपनी के 82.6 है, और इक्विटी जो डिविडेंड यील्ड है 7.86 के अराउंड है। द नेक्स्ट अपडेट है किर्लोस्कर ऑयल इंजन जो कंपनी है, उनके जो प्रमोटर है उन्होंने डाइवेस्ट किया है 17.71% स्टेक कंपनी से, और 825 करोड़ ओपन मार्केट से ट्रांजैक्शन किया है। ये कंपनी के जो प्रमोटर ग्रुप है वो ऑफलोड कर रहे हैं शेयर्स, इंक्लूडिंग ज्योत्सना गौतम कुलकर्णी, अंबर गौतम कुलकर्णी और निहार गौतम कुलकर्णी। ओवरऑल ये हो रहा है। नेक्स्ट अपडेट है अलम्बिक फार्मा के ऊपर। अलम्बिक फार्मा है, उन्होंने अनाउंस किया कि उनको फाइनल अप्रूवल रिसीव हुआ है यूएस एफडीए से, जो एब्रिवेटेड करेंगे न्यू ड्रग एप्लीकेशन प्राइजोसिन हाइड्रोक्लोराइड कैप्सूल का, जो बेसिकली हाइपरटेंशन के लिए ट्रीट होता है। और ये अप्रूवल एएनडीए जो है, जो थेरेप्यूटिकल इक्विवेलेंट जो रेफरेंस है लिस्टेड ड्रग प्रोडक्ट है, और ये मिनी प्रेस कैप्सूल है 1 mg 2 mg और 5 mg का। इसके ऊपर कंपनी ने एक्सचेंज पे भी नोटिफिकेशन रिलीज किया है। इसके अलावा मार्केट के ऊपर अपडेट है, आज एक्सपायरी है तो मार्केट में थोड़ा ब्रिगेडर देखने मिलेगा, और जो एक्सपायरी है वो निफ्टी की 17,800 के अराउंड आ सकती है, और बैंक निफ्टी की 41,800 के अराउंड लेवल पे हो सकती है। So that's it from our end. Thank you everyone for joining the morning con call. Have a nice day.